Hi guys, today I am with the Aipmt 2008 question paper with whole solution of physics and chemistry. Biology section will be in next lecture. So without wasting time, the first question is: a particle of mass m is projected with velocity v, making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, of the magnitude of the change of in its momentum will be. So here we have to calculate the change in momentum simply, and consider this is a level ground, and when we a particle is projected with it makes 45 degree. This is 45 degree, and when particle lands on the surface, this makes also an angle that is equals to the 45 degree, because the angle of projection is equals to the angle at which it lands. Okay, then these two, if we draw a vector diagram, then it will be like this. These two lines are perpendicular to each other, and this will be 45 degree each. So then by vector rules, we know that it's the two perpendicular vector, then the resultant vector is equals to root under of p1 square plus p2 square. So the answer will be our m root 2, that is option 1. Okay, now the next question is a long solenoid having 500 turns. When the current of 2 ampere is passed through it, the resulting magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 Weber. Weber is the SI unit of magnetic field. Okay, the self inductance of the solenoid, we know that total flux, that is phi, is equals to Li. From here we can calculate the L is the self inductance and I is the current. Then L is equals to phi by I, and phi is given and I is given. So after calculation we will get answer. So the correct options will be 1 Henry, that is option A. Okay, now third question. Here third question says that a particle of mass m, charge q and kinetic energy t enters a transverse uniform magnetic field of induction b. After 3 seconds the change in after 3 seconds the kinetic energy of the particle will be. Here the concept is the magnetic field can't change the kinetic energy of the particle. So the answer, our answer will be option A, that is T only, because here the kinetic energy is independent of the change in magnetic field. Okay, now next question says that the distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration of 4 by 3 meter per second square in the third second is. Here many students can make a mistake by using this formula, as is equals to ut plus half at, and then putting the value of u as 0. But here this is not the question. Here the question, here we will use the formula, that is Sn is equals to u plus a by 2 2n minus 1. Okay, here by using this formula, that is Sn is equals to u plus a by 2 2n minus 1. Here u is 0, and we know a is given, a is 4 by 3 and 2. Therefore after calculation we will get 10 by 3 as our answer. So answer of this question is option number 1, that is 10 by 3 meter. Now the fifth question says that a particle of mass 1 mg has the same wavelength as the electron moving at the velocity of 3 into 10 to the power 6 meter per second. The velocity of the particle is, mass of electron is given, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Okay, here we will use the concept of de Broglie wavelength, that is h is equals to lambda is equals to h by p. That is, here p is momentum, h is Planck's constant, whose value is 6.62 in 10 to the power minus 34. But we will not use the value of h. Here the relation will come out to be, that is p, we can write p as mv. So we can say that here relation will be m1 v1 is equals to m2 v2. Okay, m2 v2, and by using this formula, here m1 is given, and we have to calculate the v2. M1 is given, m2 is given,
and everything is given, we have to calculate V2. So after calculation, our answer will be, that is 2.7 into 10 to the power minus 18. That is option number 3, C. Okay. Now, sixth question. Sand is being dropped on a conveyor belt at a rate of m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second will be. It's an interesting question here. It is somehow tricky question. ये थोड़ा tricky question है. Required force, we have to calculate the required force. So we will use here the formula of F is equals to dp by dt. I think you all know this formula, and after calculation we will get, here we will differentiate, and with respect to t, so we will get m dv by dt, and multiplication rule of differentiation. I think you all know this. If you don't know, then you tell me. I will make a separate video of on this basic mathematics, which is being used in NEET, which will be very useful for us. Okay, let me erase this. Okay, this, and after calculation you will use the formula F is equals to dp by dt, and after differentiating mv dp, here हम p को लिख सकते हैं mv, और एक बार m को बाहर निकालेंगे, v को dv by dt लिखेंगे प्लस v dm by dt, और उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें mv न्यूटन, ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर. ओके. नाउ सेवन क्वेश्चन सेज दैट a thin conducting ring of radius r is given a charge plus q. Electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB on the ring is. Here the correct option is E along OK. Okay, and here the concept is net electric field at O. Electric field at O is equals to 0. Okay, and using this concept, our correct option will be option number 4, that is E along OK will be the electric field at the center due to charge on the part A, C, D, B of the ring. Okay, now the eighth question, two nuclei and their mass number in the ratio of 1:3. The ratio of the nuclear density, we know that nuclear density rho is independent of does not depends on any parameter which is included of mass, means rho is independent of mass, so the correct option will be 2, 1:1. Now come to fourth ninth number question. If mass Az, mp and mn denote the masses of nucleus A, X, Z, proton and neutron respectively in units of U, that is 1 U का वैल्यू दिया हुआ है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट्स एज बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है और ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए. सो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. 10th number question, it is a very easy question but a little bit tricky and confusing also. A particle shows distance time curve as shown in the figure. The maximum instantaneous means instantaneous velocity of the particle is around the point. Instantaneous means sudden, that is here we will use the जैसे velocity हम करेंगे तो instantaneous velocity निकालने के लिए हम ds by dt करते हैं, यानी डिफ्रेंसीशन यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस में, और एवरेज में हम डेल्टा का यूज़ करते हैं. ओके, तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी डी पॉइंट पे मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा. सॉरी, डी पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि डी पॉइंट पे नहीं, सी पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा. ओके. Now come to question number 12. An electric kettle takes 4 ampere current of 220 volt. 4 ampere current of 220 volt. How much time will it take to boil 1 kg of water from a temperature of 20 degrees Celsius? Temperature of boiling water is 100 degrees Celsius. Temperature of boiling water is 100 degrees Celsius. I think this question is also a little bit tricky, but it is an easy one, not so tough. Here electric kettle is itna. Okay, then 220 into T,
Vt is equals to 1000 into 100 minus 20 by 4.2. Okay, by using this formula we will get 6.3 minutes as our answer. So the correct option, the correct answer will be 6.3 C number. Okay, now come to 13 number question. In the phenomenon of electric discharge through a gases at low temperature, it is a very easy question. The colored glow in the test ट्यूब अपीयर्स एज, ये केमिस्ट्री बेस से भी हम अपना आंसर दे सकते हैं. इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन कलर आता है ना, केमिस्ट्री में ये सब पढ़े हैं कि डी ट्रांजिशन जिसमें होगा उसमें कलर इम्पार्ट होगा, तो उससे भी हम इसका आंसर दे सकते हैं. नाउ come to question number 14. Question number 14 is also a very easy and question. हमें बस इसका नॉलेज होना चाहिए, बाकी ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. तो इसमें पूछा है द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू. ये सर्किट जो दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट है. ओके, सो यहाँ पे पहले नॉर गेट है, फिर नैंड है, फिर नॉट है. ठीक है, अभी सीबीएसई के सिलेबस तो ये हटा दिया, इसीलिए आई थिंक प्रोबेबली इसके क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं उतना ध्यान देते हैं, तो इसलिए ये और बहुत इजी है, इसलिए पढ़ लेना इसे एक बार. इस क्वेश्चन से मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा. ये नॉर गेट है, हम यहाँ पे अगर x मानते हैं इस पॉइंट पे हम अगर x मानते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, x हो जाएगा मेरा a प्लस बी, और यहाँ पे ये नॉट गेन का कॉम्बिनेशन, तो ये नॉट लग जाएगा फिर. ठीक है, अगर y हम यहाँ मानते हैं, y यहाँ पे इस मिड पॉइंट पे y मानते हैं, तो y हो जाएगा मेरा x का बार. ठीक है, यानी a प्लस बी सिंपल, क्योंकि बार बार कट जाएगा वो हमारा, ये जो ऊपर वाला लाइन ये कट गया दो, और वैसे ही फिर z हो जाएगा तो y का नॉट, दिस इज सिंबल ऑफ नॉट. सो a प्लस बी का नॉट, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा NOR gate. So our correct option will be NOR gate, option A. And third one is also a easy. 15 number question बहुत easy है. 15, if an error in the measurement of radius of space 2%, then the error तो simple है यार, error जितना होता है 2% into delta r by r. So यहाँ पे correct option हो जाएगा 6%. 16 अब देखते हैं. 16, a thin rod of length okay, I think a thin rod of length L and mass m is bent at a midpoint in a two halves so that the angle between them is 90 degree. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane determined by the point two half of the rod is. सो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है. सेंटर ऑफ मास ये सबसे रिलेटेड है, रोटेशनल मोशंस का क्वेश्चन है, और ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट थोड़ा ध्यान देना. इसमें हो जाता है, अगर हम दो रॉड मानते हैं, ये परपेंडिकुलर दो रॉड हो गए, ये कांटेक्ट है ये पॉइंट पे, ये L/2 हो गया, ये भी L/2 हो जाएगा. ठीक है, ये M/2 हो जाएगा, ये भी M/2 हो जाएगा, दोनों M/2 हो जाएगा इस मिड पॉइंट से. सो हम आई का डाल देंगे, आई हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद 1/3, और ऐसे करके M/2 M/2 L/2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज mL²/12. And 17th number. Now come to 17th number. A PN diode is made of a material with a band gap of 2 electron volt. The minimum frequency of radiation that can be absorbed by the material is nearly it. ये भी बहुत easy question है. At minimum frequency of radiation that is HV is equals to 2 electron volt. तो हम यहाँ से V निकाल सकते हैं 2 electron volt. तो V हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1.6. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम अगर हर्ट्स या जूल में करते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 by 6.6 into 10⁻34. Now so our answer will comes out to be 5 into 10⁻14 hertz. Okay, now 18th number question, let's read what it says. Two periodic
Waves of intensity I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. Sum of maximum and minimum intensity is. Maximum intensity I know means हमें पता है कि maximum intensity किस दे देते हैं, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, ये होता है मैक्सिमम. और मिनिमम होता है रूट अंडर आई वन माइनस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर. सो हमारा आंसर आ जाएगा इससे टू, ऑप्शन नंबर 3, टू आई वन प्लस आई टू. ओके. Now come to question number 19. Question number 19 says that if Q and E denote respectively the heat added change in internal energy and the work done in the cyclic process, then इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. साइक्लिक प्रोसेस में हमें सबको पता है कि इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है, दैट इज इंटरनल एनर्जी को ई बोलते हैं. तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए. 20 number. In a circuit shown, the current to a 4 ohm resistor is 1 ampere. When the points P and M are connected to a DC source voltage source, the potential difference between the points P and point between M, this point, and N, this point, यानी हम इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें करंट चाहिए और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है. तो हमें यहाँ पे पहले देख लेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं ना. ये हो गया हमारा पैरेलल में हो गया 4 3. तो देखो यहाँ पे 4 ओम के अक्रॉस है वोल्टेज 4 वोल्ट, 1 एम्पियर का जा रहा है, तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा. 3 ओम के भी अक्रॉस 4 वोल्ट होगा, तो ये पूरा में हम 4 वोल्ट, यानी हम एक सर्किट बनाएंगे. तो अगर हम एक सर्किट बनाते हैं P2M, एक सर्किट हम P और M 4 वोल्ट हो गया. तो अगर हम P2M सर्किट बनाते हैं तो ये एक हमारा रजिस्टर हो जाएगा और ये एक रजिस्टर हो जाएगा. ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा M. ये हो गया मेरा, ये दोनों 1.5 का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 0.25 हो गया. और ये 1 ओम, ये दोनों का हो गया, ये कैंसिल हो, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो ये पी एम के अक्रॉस सेम होगा, इन इसमें ऊपर वाले लूप में भी और नीचे वाले लूप में भी सेम ही होगा. सो एक बार रब करके फिर से ये हो गया, एक रजिस्टर ऐसे, एक रजिस्टर ऐसे, ये P हो गया, ये M हो गया, ये 0.25 रजिस्टर इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये 1 ओम. ठीक है. और इसका कैलकुलेशन करके हम फिर आफ्टर कैलकुलेशन V निकालेंगे तो 1/1 प्लस 0.25 टू इंटू 4, आंसर विल बी 3.2. हमारा आंसर हो जाएगा 3.2. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21. ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, और इसमें हम क्वेश्चंस में न्यू स्केल लीनियर W स्केल, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 39 डिग्री सेल्सियस एंड 239 डिग्री, what respectively, what will be the temperature on the new scale corresponding to the temperature of 39 degree Celsius on a Celsius scale. Here बहुत easy question है यार, simple है ये. 39 minus 0 divide by 100 minus 0 is equals to W minus 39 and 239 minus 39. तो ये बहुत easy question है, यहाँ आंसर हो जाएगा 117 डिग्री W. ये कोई नया स्केल हो. देखो ये 22 नंबर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और थोड़ा ट्रिकी भी है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो काफ़ी बार रिपीट होते जाता है हमारे नीट एग्जामिनेशंस में. बहुत काफ़ी बार मैंने देखा है कि रिपीट हुआ है क्वेश्चंस इसके, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आए. तो यहाँ पे क्वेश्चन का वेव दिया हुआ है y=0.25 साइन 10 पाई एक्स माइनस 2 पाई एफ. ये माइनस और प्लस जो ब्रैकेट में फेज कांस्टेंट फेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वे एक्स मीटर एंड टी इन सेकेंड. देखो ये पहले में हम एलिमिनेशन, यहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं. तो एलिमिनेशन से पहले हमको ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि ओमेगा और एक्स और टी का अगर दोनों का ये चेंज हो रहा है, मतलब साइन चेंज हो, यानी एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, तो वो जो वेव का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है. तो पहले ही से ही हम ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को कट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा. और ठीक है, तो फिर ओमेगा है ना 2 पाई/t है, तो हम फ्रीक्वेंसी डालते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई. यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई. यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, दैट इज़ एफ इज इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज. तो ये 1 और 4 बचा, तो 4 में से 4 भी कट गया, तो आंसर हमारा हो जाएगा, सही ऑप्शन है 1 नंबर. ओके.
Now come to the question number 23, and the question says that the electric potential at a point in a free space due to charge q coulomb is q into 10 to the power 11 volt. The electric field at that point is 4 pi epsilon naught q into 10 to the power 20 volt per meter to and ये सब ऑप्शंस है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हमारा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल्स टू q इंटू 10 टू पावर 11. मैंने क्या बोला? q in divided by 4 pi epsilon naught r is equals to q into 10 to power 11. therefore हमारा ऐसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, और यहाँ सॉल्व करते करते हमारा वैल्यू आ जाएगा 4 pi epsilon naught q into 10 to the power 22. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 pi epsilon naught q into 10 to the power 22. यहाँ पे हमने यूज़ किया था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है. क्यू यहाँ पे हम बस यही यूज़ किया था कि क्यू बाई ए होता है ना जो 4 पाई, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 10 टू पावर 11. यहाँ से हमको ये रिलेशन आ जाएगा किसका? दी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको रिलेशन आ जाएगा. दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू into 10 to the power 11. So answer will be this. Now come to question number 24. That is, it is a very easy question. By verbally we can give the answer as the velocity of electromagnetic wave in the permittivity और epsilon naught and इसका आंसर बहुत ईजी है, और इसके लिए हमको मेरे को नहीं लगता कि अगर नीट के स्टूडेंट है और अगर वो तैयारी करा तो इसका आंसर कुछ भी प्रॉब्लम होगा. फिर भी c इज इक्वल्स टू 1 बाई सी होता है यहाँ पे c, दैट इज़ वेलोसिटी. सी को हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ओके. 25. 2 points are located at distance of 10 meter and 15 meter from a source of oscillation. The period of oscillation is 0.05 second and the velocity of the wave is 300 meter per second. What is the phase difference between the oscillation at 2 points? It is a very important question, and concept, इसका concept भी उतना ही important जितना important ये question है. यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस पूछ रहा है, दैट इज़ डेल्टा फाई. तो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट हमें याद रहना चाहिए, दैट इज़ डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा 2 पाई. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़ होता है हमारे क्वेश्चंस में. तो यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और एक लैम्डा इज इक्वल्स टू वी बाई एन, एन फ्रिक्वेंसी हो गया. तो यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे. तो यहाँ से लैम्डा निकलेगा मेरा 5 मीटर, और लैम्डा को इस वाले में पुट करके दैट इज़ डेल्टा एक्स हो जाएगा 5, लैम्डा हो जाएगा 15 मीटर, 15 मीटर डेल्टा एक्स हो जाएगा 5 मीटर और लैम्डा हो जाएगा 15 मीटर. उससे हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3. So the correct answer will be 2 pi by 3. That is option number D. Two simple harmonic motions of angular. Now question number 26. Two simple harmonic motions of angular frequency 101,000 radian per second have the same displacement amplitude. यहाँ रिलेशन होता है एक ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू नहीं, ओमेगा नहीं, ये रिलेशन हमारा होता है ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो हम यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है. एक्सेलरेशन क्या है? टू सिंपल एंगुलर फ्रिक्वेंसी इतना हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पे से रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लो यार. ओमेगा 1 स्क्वायर ए बाई एक्सेलरेशन सेम है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रेशियो 1:10 टू द पावर 2. देखना ऑप्शन अच्छे से देख कर मारना. मैं जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने यही ऑप्शन नंबर 1 ही मार दिया था, बट ऑप्शन 4 सही होगा. Now 27 question number. If a lattice parameter of a crystalline structure is 3.6, the atomic radius of a in FCC crystal solid state का क्वेश्चन है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है. इसका सिंपल फॉर्मूला होता है r + 2r + r इज इक्वल्स टू a√2. यहाँ से r निकल जाएगा a/√2. r इज इक्वल्स टू a/2√2. अब सिंपल यहाँ से वैल्यू पुट करो. a दिया हुआ है वो 2.6, ए दिया हुआ है 3.6, दैट इज़ लैटिस पैरामीटर. ए इज़ लैटिस पैरामीटर जो कि 3.6 दिया हुआ है. 2√2 वैल्यू पता है 1. इसका आंसर हो जाएगा 1.27. दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी.
ऑप्शन नंबर बी. Okay, 2. Now question number 28. 28 में पूछ रहा है हमारे कि water falls from a height of 60 meter at a rate of 15 kilometer per second to operate a turbine. The losses due to the frictional forces are 10% of energy. How much power is generated by the turbine? Okay, how much power is generated by the turbine? Here generated power is equals to mgh by t into 90/100. ओके 90/100 क्यों किया? क्योंकि 10% लॉस हो गया तो कितना बचा? 100 में से 90% कितना बचा? तो 10% में तो वही हमको निकालना था. एम जी एच जनरेटेड पावर इज इक्वल्स टू एम जी एच बाई 2 इंटू 90/100. एम भी दिया हुआ है, एम हो गया 15, जी को 10 मानते हैं, एच हो गया 60 मीटर, टी 1 सेकेंड. ओके, टी इज़ 1 सेकेंड. और इससे रिलेशन यही यूज़ करके अभी इतना बहुत ईजी क्वेश्चन यार, इतना बता दिया. थर्ड नंबर ऑप्शन होगा आंसर. ओके, नाउ 29. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ अ प्लेट सेपरेशन D and plate area of cross section A such that the uniform electric field between the plate is E. यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है. यहाँ पे पूछा है हमें कि द इतना रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं भूलना, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर. पता है सी हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. और वी हो जाता है हमारा ई डी. ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ई डी का होल स्क्वायर, क्योंकि सी वी का होल स्क्वायर है. इस रिलेशन से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी.